गुड इवनिंग एवरीवन। सुप्रिया, ऋतिक, मधुस्मिता, सिमरन, सुश्री, सुदीप्ता, प्रियदर्शिनी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो टिके कंफर्म करो वॉइस ऑडिबल होउची ना नहीं एंड वीडियो क्लियरली आसुची ना नहीं। गुड इवनिंग अंकिता, प्रियंका, प्रियदर्शिनी। क्लास स्टार्ट हबार ऊपर अच्छी, समस्ते जॉइन करो शीघ्र। जय जगन्नाथ पाल, दिनेश गुड इवनिंग। 32 अच्छा, चलो चलो शीघ्र शीघ्र। आज आज जमी 200 लगे कथा। एटा हला लास्ट मिनिट टिप्स माने एते तुमको एमती बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सार आज डिस्कशन करिवे निहाती भाव में, जोटा कि ओयूटी एंट्रेंस रे तुमको माने 95% चांस अछि सेटा आसीबो ही आसीबो। ठीक अछि। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर अछि ना नहीं? मधुस्मिता स्टार्ट करिवा, शीघ्र स्टार्ट करिवा। डेजलिन गुड इवनिंग। प्रिंस सागर गुड इवनिंग। साथ डर लगुच एग्जाम पाई, एकदम डरवा दरकार नहीं। पूरा रिलैक्स माइंड रे जाओ, किसी टेंशन नहीं, आराम से परीक्षा लिखो। चलो चलो आउ किए कोठी अच्छे शीघ्र शीघ्र पळै आसो। 50 हो गले क्लास स्टार्ट करिबा। ऑल परफेक्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग हरिहर, वर्षा रानी गुड इवनिंग। मधुस्मिता राधे राधे। सर 4 डेट रो क्वेश्चन एंड 6 डेट रो क्वेश्चन रे एग्जाम 6 डेट रे एग्जाम रे आसीबो की? ऑब्वियसली नहीं। ओके, सो सेशन स्टार्ट करिबा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। विद्यासागर क्लासेस को आपण मानको समस्त को स्वागत। तो आज रो एई सेशन हमें स्टार्ट करिबा पूर्वरु मु आपण मानको सहित जणे व्यक्ति को परिचित करबा पई चाहूची, जे कि आपण माने जो दीर्घ 2 मास धरी क्लासेस करिले, सेटअप आपनकर जो क्लासेस हला, क्वेश्चंस पाइले, फैकल्टीज आपण मानको पढेइले एंड एई सब जिंस मैनेजमेंट रो टोटली जे गुरु दायित्व रे अछंती, ओनली एंड ओनली आपण मानको पई दिन राती से एक करिकी केमिति पिला माने बेटर क्वालिटी ऑफ कोचिंग पाई परिबे। आज नुह केवल दीर्घ 18 वर्ष हलानी से आम पाई आपण मानको पाई काम करि आछंती। सेही व्यक्ति को सहित आपण परिचित करबा पई चाहूची। तो नॉन अदर देन वन एंड ओनली आवर एमडी प्रदीप कुमार महापात्र सर। तो सर प्लीज आसीबे हम लाइव सेशन को। धन्यवाद मुरली सर। तो मोर प्रिय छात्र छात्री माने, तो ओयूटी एग्जाम पाई तम मानकु बहुत बहुत शुभकामना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो किछिटा लास्ट मिनिट टिप्स तम मानकु दबा को चाहिबी। तो आई होप तम माने धैर्य धर के बेसी नाही 2-3 मिनिट कहबी, तापर तम मान पय बडा बडा जिंस तमरो प्रिय युधिष्ठिर सर रखिचंती। ता पूर्वरु मो प्रथमे धन्यवाद देबी दी जण को। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल आर दोस जो माने कि दीर्घ गला 2 मास धरी आपण मान पय कि अविरांत भाव में इनसेसेंटली से माने क्वेश्चन तैयारी करथिले एवं आपण माने जो माने अनेक संख्या रे पाखापाखि लक्षे प्लस व्यूअर्स देखिचंती हम मानकर। तो जो असंख्य पिला हमर लास्ट टाइम पाइथिले, मु भाबुचे एथर मथ विद्यासागर से सफलता दोहराइबो एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर क्वाइट कैपेबल ऑफ क्रैकिंग द टेस्ट। तो लास्ट मिनिट टिप्स हला गोटे जिंस मन रख पिले, काली दिनटा को तमे मान जदी एग्जाम भाबिबो ताले माइंड टा क्लाउडेड कंफ्यूजन होबो। तो जस्ट approach the exam day just as another day in your life। काहेकि जदी रिलैक्स हे कि रिलैक्स इन द सेंस कॉन्फिडेंस रखिबो, बट डोंट टेक अनड्यू प्रेशर। आ जो 200 टा क्वेश्चन 120 मिनिट रे होची, यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट ए सिंगल सेकंड। तो जेते बेले तमे एग्जाम पेपर पाइबो एठी सेठी अनेवा दरकार नै। सिंपली स्टार्ट विथ ए सिंगल पोज, डोंट लुक हियर एंड देयर एंड जोटा आसुची प्रथमे करो, यू विल गेन इन कॉन्फिडेंस एंड स्लोली देखिबो गोटे दीटा ठीक हे गला परे तम मानकर माइंड रो सेल ओडा आपे आपे खोल जिवो। आ पर्टिकुलरली जेहेतु आपण माने हमर YouTube रे प्रतिटी प्रिपरेशन युधिष्ठिर सर
विश्वरंजन सर केमिस्ट्री, जुदिश्वर सर बायोलॉजी, आमर सूर्य सर, मुरली सर एंड ऑल ऑफ द फैकल्टीज हैव गिवन इट देयर ऑल टू ऑल ऑफ यू। सेति पय मु प्रेटी कॉन्फिडेंट आपण माने भी धैर्य धर के वीडियो गुडी को हमर घंटा घंटा देखिसंती, प्रीवियस पेपर डिस्कशन हे जाईची, आपण माने हमर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी बहुत संख्या रे नेइछंती। सो डोंट वरी, इवन इफ सब बेले मु विश्वास करे जे फेलियर एंड सक्सेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आमे सक्सेस मेंटालिटी नै कि जीवा शेष पर्यंत हार मानि मानि आ सबटु बड़ कथा हला एग्जाम सरला परे हमर 7 तारिख दिन गोटे मीटअप प्रोग्राम होची। हमर जे ओयूटी रो जे चीफ एकेडमिक हेड अछन चंद्रकांत सर, जे कि आपण मानकू संपूर्ण रूपे ओयूटी परे काउंसलिंग जोटा कहंती कोन कोन डिसिप्लिन अछि, कोन कोन को फील्ड रे तमे करियर करि परिबो, कोन कोन कॉलेज अछि, तार डिटेल ए टू जेड हमर सेटा ऑफलाइन मोड रे इंस्टिट्यूट रे हबो। ता पई आपनकर मुरली सर डिटेल ले कहिबे। तो सेथि पई मु भाउची आपण मान जदी पारिबे भुवनेश्वर आसंतु, आपनकर जो विद्यासागर क्लासेस को आपण माने एते भरोसा करछंती, तो आसिकी जो माने एठी पढुछंती सेमान तो एठी अछंती, आ जो माने यूट्यूब रे अछंती से गोटे दिन आसंतु एंड दे विल डेफिनेटली गेट a lot of counseling. So again, all the best to all of you and keep watching Bidyasagar classes. In the coming few hours, lot of good things are in store for you. Thank you. So मैं एबे रिक्वेस्ट करी मुरली सर को ए क्लास टिप सेशन टिप आउट के आगे नवा पाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तांका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ रु हमको किछि चीज पिला को टिप्स देथिबा पाई। एंड सर जो जिनसटा पिला माने कहले तुमको कि 7 तारिख दिन 7th of जून, तो से दिन जो आमे माने लाइव कैरियर काउंसलिंग करिचे मु युधिष्ठिर सर आपण माननको बहुत गुडा कैरियर टिप्स देइतिलु। तो सेही टिप्स विषय रे जो हार आपनकर ओयूटी एग्जाम परे जो जो जिनस गुडा डाउट्स रहि जाइछिबो, एग्जाम देइदला जानि दबो ना केमति तमरा एग्जाम हेला, केते को हमर मार्क रहि परिबो, एक्सपेक्टेड तमे केते बढ़िया रे स्कोर करिछ। तो सेही रिलेटेड से जिनस को नै कि गोटे काउंसलिंग सेशन रखा हबो, दैट टू इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन रे विद्यासागर क्लासेस टीम तुमको रिक्वेस्ट करूची, तुम मानकर साथ चाहूची, जो माने भी पॉसिबल हे पारुची निहाती भाबरे 7 जून दिन सकाळ 10टा भितरे भुवनेश्वर आसी पहुंचंतु। आउ आम सहित डायरेक्टली ऑफलाइन इंटरेक्शन करके आपण काउंसलिंग सेशन को बेटर करंतु। तो खाली रे भी नहीं, आपण माने से दिन आसिले आमे गोटे ग्रैंड लॉन्च भी पार्टी भी रखाइची, तो आपण से दिन आसिले हमर से ग्रैंड लॉन्च रो भी आपण पार्टी परिबे मिसे कि हमर सकाळ 10टा रु संध्या 4टा 5टा पर्यंत जो पर्यंत आपण माने रहिबे सेही पर्यंत आपण को पूरा टोटली टाइम दिया जिवो। तो समस्त को रिक्वेस्ट रहिला मुरली सर को तरफ रु पूरा विद्यासागर क्लासेस टीम तरफ रु कि निहाती 7 तारिख दिन आसी पहुंचतु। तो आजिर एही सेशन आउट डेरी न करिकी आपण को प्रिय युधिष्ठिर सर को डाकिबा लास्ट मिनिट रे आपण को किछटा इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट टिप्स एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण डिस्कशन करिवे। तो सर प्लीज। So good evening everyone and जय जगन्नाथ। तो पिले माने तो दीटा कथा नोटिस करिवो जेति कि ओके जय जगन्नाथ। तो दीटा कथा नोटिस करिवो जेति कि प्रदीप सर हमर कहिले कि लास्ट टाइम रे तुमको 200 टा क्वेश्चन को 120 मिनिट गोटे पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एग्जाम को जमे से जो काली रो जो डेट को तमे केबे भी हेले गोटे नॉर्मल डे भाबिवो, केबे भी गोटे एग्जाम डे बोली भाबिवो नाही। तो दीटा कथा तमे नियत रे मानि कि चलो, बिकॉज़ जदी तमे एग्जाम डे चलिवो तो सर जेमति कहिले कि पैनिक हे जिवो एंड इजी क्वेश्चन भी भूल करिवो, एटा श्योर शॉट। एतले तमे पूरा पैनिक हे जिवो, डर आसीजो कि मु कोन करबी कोन नाही, तो 100% इजी क्वेश्चन हडबड रे भूल करिवो, इजी कैलकुलेशन भूल होबो। माने 6 4 मिसले 10 होतिवो, तमर किंतु 6 4 मिसे के 9 करतिवो, आंसर हो नथिवो। सो दैट केबे भी हेले पैनिक होबा नै, आराम से एग्जामिनर जहां भी क्वेश्चन पचारे ग्यारंटी किछि क्वेश्चन लूज क्वेश्चन छाडिथिवो। एंड देखो जेहेतु सब शिफ्ट रे जो शिफ्ट चेंज हो जाउची, तो कौन सी शिफ्ट रो क्वेश्चन रिपीटेशन होबनी, किंतु एटा श्योर फर्स्ट शिफ्ट रे जो क्वेश्चन पडितला सेही वेराइटी रो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट रे पडिवो, एटा 100% श्योर। काहे कि ना जेतबेले जनरली जेतबेले एग्जामिनर क्वेश्चंस करंती, तो क्वेश्चन रो गोटे क्वेश्चन को नेकी केमिति चारटा टाइप रो क्वेश्चन हेई परिबो, सेही वेराइटी रो क्वेश्चन हेइतो। एमति नाही कि धरो फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन को नेकी क्वेश्चन कराइछि, प्रथम शिफ्ट रे क्वेश्चन पचारिबो सपोज ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम को कंट्रैक्शन करे हेल्प करे, सेकंड क्वेश्चन में पचारि परिबो ऑक्सीटोसिन रो दैट इज कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन ना मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन। तो केबे बेले भाबिबोनी कि क्वेश्चन रो पूरा डिफिकल्टी लेवल प्रथम शिफ्ट रे अधिका थिला एंड सेकंड शिफ्ट रे पूरा इजी थिला, प्रथम शिफ्ट रे पूरा इजी थिला, थर्ड शिफ्ट रे पूरा डिफिकल्ट थिला। एटा केमति होइनी, सब बेल पई क्वेश्चन लेवल जेति कि शिफ्ट हबो 4 एंड 6 रे सब शिफ्ट रो पूरा
दैट इज क्वेश्चन गुड़ाक प्राय सेम टू सेम रहिबो एंड सेम लेवल रहिबो ठीक अछि तो जम्मा भी ओरिएट होबार नाही एंड बेसिकली जेहेतु तुम माने एते समय प्रिपरेशन कलण काना सो नियत रूपे सो ट्राई करो कि माइंड को कूल रखिया पई एंड जति रात्रि जल्दी सोइबो बिंदास रे किछ नाही जो मानकर सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट एग्जाम अछि तो से माने आराम से रात्रि टिके पढो एंड जो मानकर फर्स्ट शिफ्ट अछि 8:30 ରୁ 10:30 आराम से रात्रि सुओ भलसे एंड भलसे सोई की सकाळ एग्जाम दियो किछि भी ओरिएट होबार नाही जहां आसीबो आराम से करिवो क्वेश्चन रे स्टिकी हेकी रहियार नाही क्वेश्चन रे बिल्कुल स्टिकी होबार नाही चलो स्किप चलो ढाबा मारो चलो हेले ओके तल चलो क्वेश्चन किछरा तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा पचार दबा जो क्वेश्चन को नेगिरी तब माने क्वेश्चन किछरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा ठीक अछि हेले तो मते को जनरली गोटे क्वेश्चन सपोज पचारला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोल्गी बॉडी क्वेश्चन देला कि जनरली लाइसोसोम रो ओरिजिन करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइसोसोम ओरिजिन लाइसोसोम रो ओरिजिन रो करेक्ट ऑर्डर ए ऑप्शन देला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी बी ऑप्शन देला गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी ऑप्शन देला माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी कोन हबो हु कैन से बायोलॉजी रो क्वेश्चन लेवल जदि हमें जहां एक्सपेक्टेशन करिया 100% 68 क्वेश्चन रु 50 क्वेश्चन तुमको आसी जीवो आउ टिके मॉडरेट लेवल रहइबो आउ 7 ରୁ 8 टा क्वेश्चन टिके टॉप लेवल रहइबो सो आंसर कोन हबो ए हमें जानि छी दैट इज लाइसोसोम फर्स्ट होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्गी बॉडी बा हमें कहि परिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करे एंड लिपिड सिंथेसिस करे एंड आल्सो वेसिकल भी फॉर्मेशन करे सेही वेसिकल भीतर जनरली ए वेसिकल टा गोल्गी बॉडी देके चले मैच्योर हुए तो सेतो जे सपोज दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस रा आउटर मेम्ब्रेन एटा सपोज तो एंड दिस इज द गोल्गी बॉडी तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो वेसिकल बाहर से वेसिकल मैच्योरेशन हैला परे लाइसोसोम हुए सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन गोल्गी बॉडी सेकंड टाइप रो क्वेश्चन पचरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी पंडा बिनिता परफेक्ट तापर मते को कि जनरली गोटे सेल को जदी हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे पकेया सेल को जदी हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे पकेबा ताहले वाटर टा सेल भीतर को एंट्री करिवो ना जनरली वाटर विल एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल वाटर टा सेल भीतर को एंट्री करिवो ना एग्जिस्ट करिवो इफ वी पुट ए सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन कोन हबो दीपांजलि दैट इज आंसर ऑलरेडी मुरली सर कहले कि नो केबे बेले क्वेश्चन रिपीटेशन होबनी नॉन पिला तो एमती रे भी गोटे पिला एग्जाम देके आसीले 50 60 70 क्वेश्चन मन रखि दबो सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे कोन हबो एंट्री हबो दैट इज एग्जिस्ट जनरली जदी हमें गोटे सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे पकेबा द वाटर विल एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस मन रखिबो देन सपोज ए गोटे सेल अछि एंड बी गोटे सेल अछि एंड एथिरे होची ऑस्मोटिक प्रेशर होची 10 एंड टर्गर प्रेशर होची 4 एथिरे ऑस्मोटिक प्रेशर होची 6 टर्गर प्रेशर होची 5 ताले मते को जनरली वाटर टा ए रु बी को मूव करिवो ना बी रु ए को मूव करिवो कोन आंसर एग्जिस्ट एंड प्लाज्मोलिसिस आंसर दियो ऑस्मोटिक प्रेशर 10 टर्गर प्रेशर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर 6 टर्गर प्रेशर 5 तो सेल टारू जनरली ए रु बी सेल को वाटर मूवमेंट करिवो और बी रु ए एंड ऑलरेडी ए क्वेश्चन तमरो ओयूटी प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी पढी सारची सो आंसर दियो कोन हबो एंड दैट इज ए रु बी एंड हम जानि छे याको केमती सॉल्व करा जीवो दैट इज डीपीडी बा जीवो एंड हम जानि छे द फार्मूला फॉर डीपीडी ओपी माइनस टीपी एंड हियर ओपी इज 10 and टीपी इज 4 so 10 minus 4 equal to 6 and here dpd diffusion pressure deficit is op minus tp 6 minus 5 equal to 1 so water always move karibo note down karibo lower dpd to higher dpd water always move from lower dpd to higher dpd ठीक अछि मन रखिबो ताहले कोटा लोअर dpd कोटा 1 हायर dpd कोटा 6 तो वाटर मूव करिवो b रु a हबो b टू a
अर्णव सर 7 जून मीटअप 7 जून मीटअप टा तुम ऑफलाइन हम तो ट्राए कर ऑफलाइन रे आसिया पई ठीक अछि लोअर टू हायर काना बढ़िया अछि सो दैट दिस इज द लोअर डीपीडी एंड दिस इज द हायर डीपीडी एंड व्हाट विल मूव फ्रॉम द लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी बी टू ए ठीक अछि भलो क्वेश्चन चलो तापर जदि हमें देखिया जनरली गोटे ऑर्डर सपोज एपटे मु लिखिबी हाइपोटोनिक एपट लिखिली हाइपरटोनिक एटे लिखिली आइसोटोनिक एंड ए बी सी आई double I and triple I. So here options are no net flow and the second option is water moves into and here water moves out कौन हबो that is A को and B को connect करो पायल आंसर को प्रियंका निवेदिता कौन हम प्रदीप्त सेलेनो एंड आम जाने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे जदि हमें सेल को पके वाटर मूव्स आउट एंड सेम दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन रे नो नेट फ्लो एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे वाटर मूव्स इनटू आसीबो ए बेला क्वेश्चन पचाले आराम्स 1C ओके हाइपोटोनिक वाटर मूव्स एंड हाइपरटोनिक ओके चलो देन मते को कि एटा भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉइल को यूज न करी कि को साइंटिस्ट सॉइल को यूज न करी जनरली दैट इज प्लांट प्रोडक्शन कर देथिल द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट द यूज ऑफ सॉइल और द टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक रे जनरली को साइंटिस्ट जे कि सॉइल रे बिना सॉइल रे विदाउट द सॉइल यूज रे प्लांट प्रोडक्शन करथिले कौन हम ऑप्शन देवी जूलियस बॉर्नस्वैक्स ना प्रिस्टली ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाट इज योर आंसर हियर जूलियस बॉर्नस्वैक्स परफेक्ट जूलियस बॉर्नस्वैक्स हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो कि बिना सॉइल रे ये करथले देन मते को कि सीड डॉर्मेंसी को बेसिकली किए प्रमोट करे सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करे किए दैट इज व्हिच प्लांट हार्मोन इज रिस्पांसिबल टू प्रमोट द सीड डॉर्मेंसी कौन आंसर सीड डॉर्मेंसी रो मीनिंग कोन हम जानि छे दैट इज unable to germinate the seed even after favorable condition so कौन अब आंसर है और समझ राइट आंसर एब्सिसिक एसिड परफेक्ट देन मते को कि दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सीक्रेटेड फ्रॉम बोथ ब्रेन एंड आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड both endocrine gland and also from brain को हार्मोन टा रिलीज हुए ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन सोमाटोस्टैटिन कौन आंसर सुदीप्ता विजयलक्ष्मी दैट इज सोमाटोस्टैटिन हार्मोन टा जे कि जनरली बोथ ब्रेन काहे कि ना ब्रेन रो हम जानि छे दैट इज ब्रेन रे हाइपोथैलेमस इज देयर एंड जनरली हाइपोथैलेमस रिलीज करियो सोमाटोस्टैटिन जोटा कि जनरली ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन एंड आल्सो सोमाटोस्टैटिन भी रिलीज हुए कोठू ना एंडोक्राइन ग्लैंड किए ना पैनक्रियास एंड पैनक्रियास रो कोठू अल्फा सेल ना बीटा सेल ना डेल्टा सेल as you know that delta cell release karibo somatostatin so somatostatin is a hormone which is actually released from the two gland that is from the two parts that is the endocrine gland pancreas and also from the brain because hypothalamus is a part of brain ठीक अछि okay then matu ke all the enzymes of Krebs cycles are present in inner membrane of mitochondria ठीक ना भूल all the membrane of
all the membrane of all the enzymes of Krebs cycles are present in inner membrane of mitochondria. This sentence is correct or wrong? ठीक अच्छी अर्णव दैट इज कौन कौन करा जीवो से रिगार्डिंग ऑल टू ऑल अपलोड करा जीवो वीडियो चलो तो जी स्टेटमेंट सेंटेंस इज फॉल्स काहे कि हमें जानि छ जेहेतु क्रेब्स साइकिल कोठ हुए हमरा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो जेहेतु क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हबो ऑल द एंजाइम्स आल्सो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट बट एक्सेप्शन मतलब कोई कि व्हिच एंजाइम जनरली दैट इज व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल रो को एंजाइम रे एक्सेप्शन अछि जोटा कि जनरली मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे मिलेनी कोन आंसर बढ़िया अच्छी फॉल्स आंसर कौन हम दैट इज सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज एन एंजाइम व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच मेटल आयन इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल रे जनरली को मेटल टा जनरली प्रेजेंट है आयरन मैग्नीशियम कॉपर जिंक व्हिच मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल मैग्नीशियम आयरन कॉपर जिंक कौन हम मैग्नीशियम परफेक्ट which light is important for the most effective in photosynthesis blue green violet generally को light रे maximum photosynthesis हुए कौन आंसर magnesium perfect then pyruvic acid plus coenzyme A plus NAD plus in presence of Mg2 plus and pyruvate dehydrogenase A plus B plus NADH H plus A plus B कौन प्रोडक्ट दबो pyruvic acid जेतले कोएंजाइम से रिएक्शन करिवो NAD plus टा कन्वर्टेड हो NADH H plus and AB कौन दबो anyone that is answer कौन हो acetyl coenzyme A and also that is H2O perfect acetyl coenzyme ready okay then mate को कि generally next question सेनेसेंस को डिले किए करे सेनेसेंस को डिले किए करे which plant hormone is responsible to delaying the senescence what is your answer which plant hormone is responsible to delaying the senescence बा बूढ़ापन को हार्मोन टा जनरली अटकाए कौन आंसर ऑक्सिन दैट इज हमें जानि छे एंटी एजिंग हार्मोन साइटोकाइनिन ओके साइटोकाइनिन सर फॉर्म बी टा देखो फॉर्म बी तमे जदी फॉर्म बी रो तमरो डेट थिला 20 मे रु 15 जून तारिख पर्यंत तो एग्जाम तुम 4 एंड 6 रे सरीबो जदी तुम कंफर्टेबल अच्छो ताले एग्जाम परे पकई दियो एंड जदी भी दैट इज तुम मन पड़िबो न पड़िबो सो दैट ट्राई करो कि एबे पकई दवा पे ठीक अछि साइटोकाइनिन ओके जनरली को कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय artificial ripening of fruits is caused by कौन आंसर artificial ripening of fruits is caused by artificial ripening of fruits is caused by ethylene perfect that is ethylene बड़े then मते को कि Cu NH3 रो होल 6 प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर कौन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन एंड यार जनरली जो देखिबा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू कौन एंड जो यार देखिबा सो ए तीनटा बार करो ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्सीडेशन नंबर कौन हबो हम जानि से 2 minus 6 into 0 again ammonia that is 0 so oxidation state is plus 2 and coordination number kete hobo jehetu that is NH3 6 coordination number is 6 and crystal phase splitting energy kon hobo and ammonia is a strong field ligand so strong field ligand mane copper plus 2 kete hobo copper jodi am oxidation that is copper electronic configuration kare kete hobo
29 18 4s1 3d10 18 10 28 29 सो +2 माने 3d9 3d9 रे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रे तो कौन हम 3d9 एंड दिट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कौन हम आंसर समस्त 3d9 आंसर कौन हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू हु कैन से आसीबो दैट इज बट एटा कौन हम 3/5 दिस वन इज -2/5 देन कैलकुलेट करियर अछि ठीक अछि ओके तो नेक्स्ट जीवा SF6 हाइब्रिडेशन केते ज्योमेट्री कोन हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री तापर मत को कि जनरली O2 एंड O2 प्लस एंड O2 2 माइनस पैरामैग्नेटिक किए डायमैग्नेटिक किए को SF6 रो कोन हबो SP हला केमती SF6 रो हाफ हाइब्रिडेशन हाफ सल्फर दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट्स सो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज 6 प्लस सराउंडिंग एटम 6 6 6 12/2 6 sp3d2 देन हाइब्रिडेशन होची sp3d2 ज्योमेट्री कोन हबो 6 हला माने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड यार बचे छी डाया पारा तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिसाओ जदी इवन अछि ताले डाया जदी ऑड अछि पारा O2 गोटे ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर 8 है दीटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16 16 अछि माने दैट इज डाया हबा कथा किंतु एक्सेप्शन 10 आहु 16 इलेक्ट्रॉन थिले कोन हबो पारा इंपोर्टेंट जनरली इवन थिले कोन हबो डाया ऑड थिले कोन हबो पारा बट एक्सेप्शन 10 आहु 16 इलेक्ट्रॉन इवन थिबा सत्वे किंतु पारा हेबे O2 प्लस 8 8 16 रे गले 15 15 माने ऑड पारा O2 2 माइनस 8 8 16 2 18 18 माने डाया डाया माने 18 माने इवन इवन माने डाया चलो बढ़िया नेक्स्ट जीवा तापर मत को जनरली माइस्थेनिया ग्रेविस हु कैन से व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस माइस्थेनिया ग्रेविस Myasthenia gravis पर what is the formula for respiratory quotient Myasthenia gravis पर respiratory quotient रो formula Myasthenia gravis पर respiratory quotient रो formula Myasthenia gravis समस्त ठीक है that is the autoimmune disorder and neuromuscular junction affected होबो paralysis होबो ठीक अछि what is the formula for respiratory quotient Respiratory quotient formula कोन वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by volume of O2 consume ना वॉल्यूम ऑफ O2 consume by volume of CO2 consume ताले कोन आंसर वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by volume of O2 consume perfect संजुला that is volume of CO2 evolved by volume of O2 consume perfect then जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन that is जदि हमें देखिबा integrated farming रे this is a cyclical zero waste procedure ना non cyclical zero waste procedure non cyclical zero waste procedure ना cyclical zero waste procedure कौन आंसर this is a cyclical zero waste procedure then मते को कि जनरली बैंगलोर रे जो 40 किलोमीटर रोड करथिले पॉलीब्लेंड को नेकिरी पॉलीब्लेंड ता जनरली कहा का नेकी पॉलीब्लेंड हु कैन से पॉलीब्लेंड ता कहार मिक्सचर एंड किए थिले जे कि जनरली बैंगलोर रे 40 किलोमीटर रोड को करथिले कोन आंसर साइक्लिकल ठीक अछि बैंगलोर रे 40 किलोमीटर रोड जो पॉलीब्लेंड को नै तयारी करथिले से थिले कि अहमद खान थिला एंड पॉलीब्लेंड कहा का नै तयारी दैट इज द मॉडिफाइड प्लास्टिक एंड द बिटुमेन प्लस मॉडिफाइड
प्लास्टिक बढ़िया ठीक अच्छे अहमद खान एंड बिटुमेन बढ़िया अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा दैट इज सुकुलेंट्स सुकुलेंट्स माने कर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कोन सुकुलेंट्स माने जनरली कोन करंती ना राति टाइम रे CO2 को इवॉल्व करंती नाही तो ए माने कर CO2 इवॉल्व होची 0 ताले सुकुलेंट माने कर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू कोन हबो CO2 इवॉल्व 0/1 ठीक अछि ओके बढ़िया अछि organic acid रो respiratory quotient less than 1 greater than 1 sorry less than 1 ना greater than 1 ना equal to 1 कोन हबो respiratory quotient of organic acid less than 1 ना more ना कोन आंसर organic acid always मन रखियो more than 1 perfect respiratory quotient of anaerobic respiration रे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कोन हबो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम जानि छे कोन O2 कंजम्पशन इज 0 O2 कंजम्पशन टाइ 0 तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कोन CO2 इवॉल्व डिवाइड बाय O2 कंज्यूम टा 0 ताले समथिंग बाय 0 कोन आंसर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन यूनिटी ना इंफिनिटी ना 0.7 ना 0.9 दैट इज इंफिनिटी मन रखिबो perfect then which hormone is responsible to the break seed dormancy को किए ब्रेक करे which hormone is responsible to break the seed dormancy हम ऑलरेडी पढ़िले that is seed dormancy को प्रमोट करे होची abscisic acid but which hormone is responsible to break the seed dormancy कोन हबो that is break seed dormancy हबो कोन जिबर्लिक एसिड परफेक्ट जिबर्लिक एसिड राइट परफेक्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तम पाखरे दैट इज यदि हमें देखिया 94 80 अच्छा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 200 milliliter of solution find molarity and find normality कौन आंसर 49 gram of H2SO4 present in 200 milliliter of solution find molarity and normality आंसर बाहर करो फटाफट देखा कार ठीक होची मोलारिटी फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ moles of solute divide by volume of solution in liter तो एठी नंबर ऑफ मोल की सॉरी सॉल्यूट की H2SO4 सो सॉल्यूट रो मोल बाहर करे फॉर्मूला कोन गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास सो गिवन मास एठी केते गिवन मास होची 49 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास केते मॉलिक्यूलर मास होची H2SO4 98 तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते देची 200 मिलीलीटर देची तो मिलीलीटर को लीटर गले डिवाइड बाय 1000 सो करि परिबो एटा केते 1/2 तो 1/2 एंड 205 1/5 आसीबो आंसर तो केते हो 1/2 into 5/1 तो 5/2 ठीक अछि एंड मोलारिटी ओके 2.5 मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी पचाय छै हम जानि छै मोलारिटी और नॉर्मलिटी द रिलेशन कोन नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर सो मोलारिटी 2.5 H2SO4 n फैक्टर केते 2 सो नॉर्मलिटी केते 5 नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर नॉमन ट्रिक होची नॉमन नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर भाबो कि गोटे पिला अछि नॉमन एंड ही इज ए क्यूट बॉय सो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर एंड बहुत सारा पिलांकर ना भी नॉमन थाए एंड नॉमन इज ए गुड नेम नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर एंड मोर गोटे सान भाईटा अछि दैट इज ताना भी नॉमन तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी n फैक्टर सो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी रे रिलेशन बाहर करबा चलो नेक्स्ट जीवा तापर को that is
एसिडिक पीएच ना बेसिक पीएच लाइसोजोम रो पीएच टा एसिडिक ना बेसिक लाइसोजोम एसिडिक ना बेसिक एंड लाइसोजाइम आको भीतर लाइसोजोम और लाइसोजोम भीतर कोटा होची स्ट्रांग एसिड आ कोटा होची वीक एसिड बा स्लाइटली एसिडिक कोटा स्ट्रांग एसिड कोटा लाइसोजोम एंड लाइसोजाइम भीतर कौन आंसर को ओके आंसर कौन है दैट इज लाइसोजाइम इज ए स्ट्रांग एसिड लाइसोजाइम दैट इज हमर सालाइवा रे थाए एंड लाइसोजाइम एक्ट ऑन 6.8 तो 6.8 है दैट इज स्लाइटली एसिडिक एंड दैट इज जदि हम देखिबा लाइसोजोम रो पीएच होची बहुत अधिक है हाईली एसिडिक 1.8 वाला है परियो 1.4 है परियो चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा CH3Cl and ClCH3 in presence of AlCl3. This reaction is called as Wurtz fitting. Now Wurtz fitting. कौन हो? CH3Cl ClCH3. Wurtz reaction ना fitting reaction ना Wurtz fitting reaction. Who can say? कौन आंसर ताले दिस इज द वुड्स फिटिंग नो वुड्स रिएक्शन रे जनरली केवल अल्काइल ग्रुप लागि थिबो फिटिंग रिएक्शन रे जदी सो सेपरेट सो दिस इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन रे जनरली गोटे बेंजीन ग्रुप लागि थिबो एंड गोटे अल्काइल ग्रुप लागि थिबो सो वुड्स फिटिंग जानि छ तमे बाकी लास्ट टाइम खाली रिवीजन करिया कथा देन मतो को कि एपिकल डोमिनेंस को की ओवरकम करे एपिकल डोमिनेंस को की ओवरकम करे ऑप्शन ऑक्सिन देन होची जिबरलिन देन होची साइटोकाइनिन व्हिच वन इज रिस्पांसिबल टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करे दैट इज साइटोकाइनिन मन रखिबो एपिकल डोमिनेंस करे होची ऑक्सिन बट एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करे होची साइटोकाइनिन परफेक्ट ओके गुड देन बढ़िया समस्या का आंसर ठीक अच्छी डोंट वरी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आंको भीतर जनरली को which one is responsible for the coloring of the fruits ro coloring leaf ro coloring the coloring of fruits and leaves by which one is responsible chloroplast chromoplast leucoplast which one is responsible for the coloring kon answer chromoplast perfect then mother koi ki the type of leucoplast which store the carbohydrate store करथवा leucoplast के को leucoplast carbohydrate store करे that is amyloplast ना elioplast ना alleroplast kon hobo who can say कार्बोहाइड्रेट स्टोर दैट इज परफेक्ट समझते हो क्रोमोप्लास्ट अछि बट यार आंसर दियो कार्बोहाइड्रेट स्टोर की करे अमाइलोप्लास्ट ओके अमाइलोप्लास्ट देन प्रोटीन स्टोर करे किए दैट इज अलेरोप्लास्ट एंड फैट स्टोर करे किए दैट इज इलायोप्लास्ट बढ़िया मन अछि सब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन what is the PCl3 रो ज्योमेट्री कोन who can say what is the geometry of PCl3 ज्योमेट्री कोन हाइब्रिडेशन कोन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन ऑफ PCl3 आंसर कोन हो आंसर कोन हो sp3d
that is PCl3 half, phosphorus को group 15, outermost electron 5, surrounding atom 3, तो 5 3 8 by 2 4 4 ହେଲା ମାନେ ତାର कोन हबो टेट्राहेड्रल 5 3 8 sp3 but PCl3 phosphorus detail explanation जो तुम देखिबो that is a trigonal pyramidal. ओके ज्योमेट्री होची टेट्राहेड्रल एंड शेप होची ट्राइगोनल पिरामिडल मन रखिता ज्योमेट्री इक्वल टू शेप केतेबेले जेतेबेले लोन पेयर इक्वल टू 0 सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड द शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल. नेक्स्ट क्वेश्चन जियो B2H6 रे को बॉन्ड अछि दैट इज कोवैलेंट ना आयोनिक ना बनाना बॉन्ड दैट इज को बॉन्ड ता जनरली B2H6 रे थाए B2H6 रे को बॉन्ड which bond is present in B2H6 covalent ionic na banana that is banana bond. Perfect. Next hello carbon monoxide is white color blue color na colorless na neutral कोन आंसर सर एडमिट कार्ड सेकंड पेज ता दरकार की बाहर कर दिथाओ हैला बाहर कर दिथाओ किछ नहीं. नेक्स्ट जीवा जनरली ऑक्सीजन के डिस्कवर करथिले हु वाज द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन डिस्कवर की करथिले सर पासपोर्ट साइज फोटो तो एडमिट कार्ड क्लियरली जमा भी मेंशन करानी कि पासपोर्ट साइज फोटो न पाई जेहेतु सीबीटी मोड हुए एंड सीबीटी मोड रे जनरली जितु एग्जाम हुए पासपोर्ट साइज दरकार पड़े फिर भी जदी नौछ ताले नहीं था मे भी जदी दरकार तो पड़िबनी फिर भी नहीं था सर एडमिट कार्ड बोथ साइड प्रिंटेड ऑन सेम पेज ओके इट्स ओके चलिबो बट आउ थरे बाहर कर दियो जदी किछि प्रॉब्लम कोन अछि खाली तमरो केते शिफ्ट एग्जाम अछि कोडा गलो तमरो नाटा तो आउ थरे बाहर कर दियो अछि तो ऑक्सीजन डिस्कवर करथिले एफडब्ल्यू वेंट then mitochondria reproduce mainly by fission this sentence is correct or incorrect mitochondria reproduce mainly by fission बा mitochondria टा generally divide करे by the fission ठीक ना बोल एंड तुमको ऑलरेडी भी टिप्स रे कहै छी आगो बायो स्टार्ट करियो इंपोर्टेंट निहाती बायोलॉजी रे 68 क्वेश्चन रु 50 टा क्वेश्चन तुमे पाइबो इजीली हे गला बढिया गारंटी तो सेही 50 टा क्वेश्चन को टैकल करियर अछि नाही कि जो 18 टा क्वेश्चन एई जगह स्टिक हेकि रहयर अछि एंड निहाती प्रति 5 रु 6 टा इजी क्वेश्चन भितरे गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन थिबो 5 रु 6 टा इजी क्वेश्चन भितरे गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन थिबो 5 रु 6 टा इजी क्वेश्चन भितरे गोटे डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन सब पे ट्राई करियो एई जगह तुम रखिया पे तो तुमको निहाती रुपे सेही जगह को स्किप करके आगु जीवार अछि हला तो जदि न रहइबो ताले सेही जगह रे रहि गेला आ जमा 50 क्वेश्चन एडी करि परिबनी एफडब्ल्यू वेंट देन को कि जनरली ई क्यूरोसा कोन डिस्कवर करथले ई क्यूरोसा कौन डिस्कवर करथले ई क्यूरोसा सर मु एग्जाम पाई जाउची एबे बस रे अछि काली पहुंचबी सर केबे लीजा मनी कोडी तम सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन एफएसएच इज सीक्रेटेड बाय ई क्यूरोटा होची गिबरलिक एसिड देन को कि जनरली क्वेश्चन होची एफएसएच इज सीक्रेटेड बाय एफएसएच टा कोड सीक्रेट हुए एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना हाइपोथैलेमस कोन आंसर एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना हाइपोथैलेमस आउ थरे सब पिला को रिक्वेस्ट अछि तो आउ थरे मु तुम कहि दोची काली तुमको एग्जाम हॉल को एडमिट कार्ड को नेकी जो ता पूर्व कहि दोची एफएसएच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एग्जाम हॉल को जीवा पूर्व फास्ट कथा होची तमरो एडमिट कार्ड नियत रूप रे तमरो एडमिट कार्ड जदी कलर फोटो बाहर करछो कलर रे एडमिट कार्ड बाहर करछो इट्स ओके जदी भी ये बाहर करछो तो चलिबो सेकंड थिक होची तमरो आईडी प्रूफ तमरो रिसेंट फोटो विथ आधार कार्ड जदी आधार कार्ड होचो तो आधार कार्ड सह तमरो रिसेंट फोटो थिवा दरकार अदरवाइज जदी आधार कार्ड रिसेंट फोटो नाही तार कॉलेज रो
दैट इज आइडेंटिटी कार्ड जोटा थिला तो कॉलेज रो आइडेंटिटी कार्ड नेकी जाओ एंड जहार वोटर आईडी पासपोर्ट ए सब अछि तो ताको नेकी जाओ पेन नेकी जाओ काहे ना ऑनलाइन मोड रे प्राय जो एग्जाम हुए तो बेसिकली पेन तो से माने दियंतिनी काहे ना पेपर दंती बट एते पिला को पेन दियंतिनी बट फिर भी जदी पेन देबे बट तुम पेन नेकी जाइता ट्रांसपेरेंट पेन नबो जो यूज एंड थ्रो पेन रो ट्रांसपेरेंट पेन नबो कोन से मेटल पेटल यूज करबोनी एति किछ नेकी जाओ लूज वेयर पिंदी की जाओ हला मेन होची तमरो जिंस होची एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ सेही दिटा होची इंपोर्टेंट ताको नै कि ही सो ड्रेस कोड कोन जदी पचारियो तो ड्रेस कोड सिंपली ड्रेस पिंदी जाओ जेहेतु हम ओटे दैट इज गोटे एग्जाम दबा को जाउचे एंड स्टूडेंट अच्छो सो दैट नियत रूपे किछि मेटल पेटल कोन से ऑर्नामेंट्स यूज करनी सिंपली ड्रेस पिंदी जाओ जेमति कि एज यूजुअल एग्जाम जो कम जाए हला सेमति कोनोसी भी किछि भी माने ड्रेस एंड मु बार बार भी कहे जेतले तुम माने जदी ड्रेस पिंदी की जदी जाउचो तो केबे भी हेले शू पिंदी की जाओनी काहे ना बेसिकली शू पिंदी गले बहुत सारा एग्जाम सेंटर रे शू को ओल्ले कि तुमको चाली की जाय पड़िबो सो ताठारो बेस्ट कथा होची तुमको बेसिकली स्लीपर पिंदी की जाओ स्लीपर पिंदी गले आ ओले पड़िबोनी बोर्ड सर्टिफिकेट जदी अछि ताले बोर्ड सर्टिफिकेट तो लिखा है बोर्ड सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड रे सो फिर भी तुम नहीं कि जाई था जदी नहीं तुम आइडेंटिटी कार्ड थिबो तो स्कूल रो आइडेंटिटी कार्ड न हेले हबोनी आ जदी तुमरो आधार कार्ड रे रिसेंट फोटो अछि ताहाले इट्स ओके आधार कार्ड रे जदी रिसेंट फोटो अछि ताहाले चलिबो बट जदी आधार कार्ड रे रिसेंट फोटो नाही छुआ बेलर फोटो अछि तो नियत रूपे नै करी जाओ किछि प्रॉब्लम नै काहे ना छुआ बेलर फोटो अछि ना तो काळे में से जगह रे जदी एग्जाम सेंटर रे वे भी कहिबे कि तुम फोटो नो बहुत सारे सेंटर अछंती जो माने कि पूरा टिक्की निकी करी देखिबे हैरान करिया मोटिव आउ भी बहुत सारे सेक्टर अछंती दैट इज पिला मिसे दे बायोमेट्रिक हे गला फिंगर हे गला सो छाड़ 10th रे 94 थिला एंड पीसीबी रे 16 हेतला ओइट रे केते मार्क आने पड़ियो 140 145 प्लस वाटर बोतल नहीं की जाओ ट्रांसपेरेंट बोतल लिखिनी बट फिर भी नहीं की जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके तो मते को कि जनरली adrenaline is important to decrease the blood glucose level केतरा सेंटेंस भीतर करेक्ट मते कहबो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हार्ट रेट को डिक्रीज करिवो अदरवाइज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन या भीतर केतेटा सेंटेंस इनकरेक्ट को सॉरी करेक्ट केतरा को एड्रेनालिन रो काम ए जोडा मु कहिली दैट इज डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करिवो हार्ट रेट को डिक्रीज करिवो एंड दैट इज स्ट्रेस हार्मोन त भीतर कोटा भीतर इनकरेक्ट कोटा करेक्ट को वन इज करेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल कमेबो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जनरली टू करेक्ट हार्ट रेट को डिक्रीज करेबो देखो एड्रेनालिन जनरली ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेबो एंड आल्सो हार्ट रेट को जनरली इंक्रीज करेबो एंड आल्सो स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाय सो सब जगह इनकरेक्ट नेक्स्ट बार दैट इज मते को कि इंसुलिन इज ए हाइपरग्लिसेमिक ना हाइपोग्लिसेमिक ना हाइपोग्लिसेमिक कौन हो हाइपरग्लिसेमिक ना हाइपोग्लिसेमिक इंसुलिन टा ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे आमे जानि छे जेतला ब्लड रे ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाए सेही लोक मानन को इंसुलिन थेरापी दिया जाए सो ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को कमी दिए कौन हो ताले हाइपो परफेक्ट तेरे हाइपोग्लिसेमिक बा हाइपोग्लिसिमिक बढ़िया चलो हाइपो नेक्स्ट बा दैट इज एंटागोनिस्ट टू ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट किए रो एंटागोनिस्ट टू ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट किए रो एंटागोनिस्ट किए ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट होची साइटोकाइनिन परफेक्ट काहे ना ऑक्सिन टा होची एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करे एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करे साइटोकाइनिन टा जनरली एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करे सेम थी जदी हम देखिबा जिबरलिक एसिड बाय जिबरलिन रो जनरली की होची एंटागोनिस्ट जिबरलिन रो एंटागोनिस्ट के फोटो नेबा को वर्षा फोटो तो तुम एडमिट कार्ड रे मेंशन करा जायनी फिर भी जदी तुम फोटो नेकी चाहो नेकी जाओ बट मैक्सिमम ऑनलाइन रे जति एग्जाम हुए तो फोटो रिक्वायर हुए नहीं काहे ना ऑनलाइन एग्जाम ना एग्जाम रे कैलकुलेट यूज करिया को देबो कि हां एग्जाम रे तुमको आर्टिफिशियल कैलकुलेट दिया जो आर्टिफिशियल कैलकुलेट कोन
ना बेसिकली आई थिंक से कैलकुलेट टा आई थिंक मैथमेटिक्स पिला पाई मे भी थाई पारे से कैलकुलेट टा गोटे राइट साइड कॉर्नर थिबो जोरा तुम यूज करि परिबो तो जिबोलिक एसिड र एंटागोनिस्ट होची एब्सिसिक एसिड as you know that एब्सिसिक एसिड जनरली कोन करे ना सी डोरमेंसी को प्रमोट करे बट जिबोलिक एसिड होची सी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करे सेति पई इनसाइड गोटे लाइन लिखा है जिबोलिक एसिड इज इंपोर्टेंट फॉर द सीड प्रोडक्शन परफेक्ट ओके तापर मते को कि जनरली Be प्लस Be2 आंको भीतर कोटा एग्जिस्ट करिवो नहीं ओते अच्छा ता पूर्व मते को कि Be2 रो बॉन्ड ऑर्डर केते दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेरिलियम Be2 रो बॉन्ड ऑर्डर कोन देखो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करे भाई पूरा इजी हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर इज 4 सो इट दीटा बेरिलियम अछि दीटा बेरिलियम माने तो जहार एटॉमिक नंबर जति की तार इलेक्ट्रॉन सेति की बेरिलियम रा एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन केते 4 सो दीटा बेरिलियम अछि तो 8 इलेक्ट्रॉन केते 8 इलेक्ट्रॉन तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर बाहर करे फार्मूला कोन नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 एया बॉन्ड ऑर्डर 1 का रहस 1 केम देबो तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 सो 8 टा को जदि हम लिखिया देखो रूल होची सिग्मा 1s2 सिग्मा चार 1s2 एई बेले बट शॉर्ट ट्रिक रे मन रखो आगो लिखिबो ba बाबा b b b a a a तो 8 टा इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट पकाओ 2 2 आ गोटे कलर चेंज कर दूची 2 2 2 1 2 3 4 5 7 8 हे गला 2 2 4 5 7 8 तो 8 टा इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्डिंग केतरा बॉन्डिंग दीटा 4 टा तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग केतरा 4 टा ए फॉर एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग केतरा 4 टा तो बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग 4 डिवाइड बाय 2 0 तो जहार बॉन्ड ऑर्डर 0 से एटम एग्जिस्ट करिवनी जेड बड़ भी एटम दो तमे आगो कोन करिवो ता इलेक्ट्रॉन को जत्ते बेटर दो तार टोटल इलेक्ट्रॉन देखि दबो तापरे बाबा बी 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 ए सपोज O2 रो बॉन्ड ऑर्डर केते पचारला O2 रो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर 8 है टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है दीटा ऑक्सीजन अछि 8 8 16 तो टोटल इलेक्ट्रॉन केते 16 गोटा ऑक्सीजन 8 है तो दीटा इलेक्ट्रॉन 16 को दैट इज कौन लिखिबा को बी ए बी 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 ए सो 16 टा को लिखिबो केमती ना 2 2 2 2 2 एतला 2 2 4 6 8 10 12 14 16 ए हला तो 2 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 सो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 बॉन्डिंग केतरा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 तो बॉन्डिंग होची केतरा 10 टा एंड ए फॉर एंटी बॉन्डिंग केतरा 1 2 3 ना 2 2 4 6 10 माइनस 6 बाय 2 4 बाय 2 2 ठीक अछि 2 परफेक्ट एटा होची तमो रूल बट जो माने जानि छ दैट इज 14 होची जदी थिबो टोटल इलेक्ट्रॉन ताले बॉन्ड ऑर्डर 3 15 हेले दैट इज 15 हेले एटा नाही कि 14 को सेंटर नै कि जियो पड़िबो सो 15 हेले 2.5 16 हेले 2 17 हेले 1.5 18 हेले 1 सो सेही बेले 13 हेले 2.5 12 हेले 2 11 हेले 1.5 10 हेले 1 एही बेले बाहर करि परिबो ना आल्सो एटा भी बाहर करि परिबो हैला टिके ए मेसेज टा देखिलो जो गौरव कोन क्वेश्चन मैं कौन पचारती क्वेश्चन टिके उपरू टिके ओके ओके छाड़ दियो स्किप कर गुड इवनिंग अनिता ओके एडमिट कार्ड कलर नले चलिबो इट्स ओके किछि प्रॉब्लम नै चलो तो मते को कि जनरली कहार बॉन्ड ऑर्डर अधिका O2 रो ना O2 प्लस रो ना O2 माइनस रो ना O2 2 माइनस रो बॉन्ड ऑर्डर रो ऑर्डर टा लेखो पूरा कोन हो बॉन्ड ऑर्डर रो टोटल लेखो ऑक्सीजन O2 केते 16 O2 16 रे कले 15 O2 16 1 17 16 2 18 ता लिखि परिबो सर काली कोन नै कि जिबू
ମୁଁ ऑलरेडी केते थर कहलानी कि काली तुम तुम एडमिट कार्ड लेके जीव एंड तुम आईडी प्रूफ लेके जीव आईडी प्रूफ रे तुम आधार कार्ड रिसेंट फोटो थिबो जदी रिसेंट फोटो नथिबो कॉलेज रे आईडी प्रूफ लेके जीव हला कॉलेज रे आईडेंटिटी कार्ड तो 14 हेले केते 3 या 15 हेले केते 2.5 16 हेले 2 17 हेले 1.5 18 हेले 1 सेमती तळु आसीबो एटा सेंटर धरिबो तळु आसीले केते 13 हेले 2.5 12 हेले 2 11 हेले 1.5 10 हेले 1 सो दैट 16 टा केते 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 एटी बॉन्ड ऑर्डर केते 15 हेले 2.5 बॉन्ड ऑर्डर 2.5 17 हेले 1.5 18 हेले 1 सो दैट से अनुसार करियबो हरिहर पेन नेकी जाओ जदि सेठी दरकार पड़ला ताले यूज करियो मे भी दरकार पड़ी पारे कहीं ना ऑनलाइन एग्जाम रे मैक्सिमम पेन दियो दिन पेपर दियंती एना मु भी जेती एग्जाम देछि जो गेट हरिका देछि नेट गेट हरिका तो सेतिरे तुमको पेपर दंती किंतु पेन देबेनी पेन ता तुम नेकी जाय पड़ो पेन ता नेई थाओ पेन ता निहात रूपे नेकी जाओ एंड जदि सेठी तुमको एग्जाम सेंटर रे मना कर देबे कि पेन दरकार पड़िबो ना पेन ता सेठी पूरा थोई दबो जीवो कंप्यूटर रे सार केमिति एग्जाम भलो हबो कंप्यूटर रे कोन एकदम सब जिंस होछि जे टिके पाठ जानिथियो दरकार आउ बहुत फास्ट करिया पड़िबो जम्मा भी गोटे क्वेश्चन स्किप दैट इज स्टिकी के रहिबोनी प्रथम रूल भलो हो एग्जाम हला भगवान दयार भलो हो स्टिकी के रहयार नाही एग्जाम रे सेठी क्वेश्चन रे एडमिट कार्ड रे तम एडमिट कार्ड रे तुम फोटो नाही ओ आप जे डाउनलोड कलो और जदि फोटो नाही देन से कथा हेडी कहइबो कि सर आ मोर एडमिट कार्ड रे मोर फोटो बाहर लानी एंड मोर होचे एटा आईडी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड कॉलेज रो हो कि आधार कार्ड हो जणेबो सेटा दैट इज सेमन जानिबे हला किछि भी टेंशन नहीं सर खाली पानी बोतल नहीं कि 2 घंटा रे पानी केतल पियो बा पानी बोतल गामुछा छत्ता सब नहीं पड़ेबो ना कोन किछि पानी बोतल कोन 2 घंटा लोक 5 दिन मासे 3 मास पर्यंत पानी पी के रहउनाते तमे पानी बोतल 2 घंटा पई पानी बोतल पानी पानी किछि नहीं सेंती पानी पेटे घर पी के जाओ पानी जमा एटे पी के जीवनी भी जेंती वाशरूम लागुथिबो पुन सेठु वाशरूम पई जाउथिबो अधा बाटर बागे की 1 2 सेई दीटा जिंस को पुन तुम जगै पड़िबो बा जोर से सुसु न लागे दरकार 2 न लागे दरकार से अनुसार टिके लाइट के 2 घंटा रे कथा आ ओटो पुनी मरुभूमि रे दैट इज बाय द ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन एते दिन रहि जाउछ तमे कोन 2 मिनिट रहि परिबनी करू नाहती कहले फाइट बॉय गेमिंग ओ ए तो पचार थिलो कि मु कथा हे जी तुम सह आउथरे सदा किटू ओके तो चलो नेक्स्ट जीवा बाकी पूरा आराम से रुओ बिंदास रे हसो खुशी रे रुओ काली जाओ एग्जाम दियो एंड बढ़िया एग्जाम जम्मा घुमेइबनी एग्जाम रे पिला अछन बहुत सारा कि एग्जाम चलतियो किंतु से घुमौतियो आ लेट नाइट करी पढिबो एग्जाम रे घुमेइबो फाइनल काहे ना से टाइम रे फैन लागिबो पूरा माहौल ओटे एमति आसीबो स्ट्रेस जेते स्ट्रेस हबो ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन एंड एग्जाम टाइम रे जो पैनिक हबो इमरजेंसी टाइम रे एड्रेनालिन सो दैट के माने निद लागियो प्रबल एटा होची इंपोर्टेंट सर नमस्कार पूर्णिमा ऑल द वेरी बेस्ट पूर्णिमा बढ़िया से एग्जाम दियो एंड सब भलो हबो सार्थक 100 थर क्वेश्चन पचलानी सार्थक करो सर मोर 10th रे एति की प्लस 2 रे एति की फैन रो गरम हवा से ए रूम प्राय रूम एसी तो लागि नथिबो बाकी देखो वर्षा पाग आसलानी ठंडा लागियो सर बीएससी नर्सिंग पाई एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग पाई तमरो एक काम करिया डेली बेसिस रे गोटे लाइव रखिया हला देखिया जे ऑडियंस मनकर कोन आसुची चलो नेक्स्ट तो बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड आसीबो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ना बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हु कैन से बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ विथ रिलेशन कोन आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड कोन आसीबो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ
परफेक्ट। अच्छा मते कहलो जनरली HF, HCl, HBr, HI आगे भितर स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑर्डर कोटा एसिडिक ऑर्डर कौन आंसर और एचआई अधिका कहीं गल देखो ना भाव आम जो तलू तलू जाए फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन सबुठार छोट किए फ्लोरिन नुह फ्लोरिन हूँ सबुठार छोट हाइड्रोजन भी छोट तो भाव जदि खलिश दैट इज खलिश जो आम सिंगर हूँ नेहाकाकर तो जदि खलिश सबुठार बड़ आटम कोड आयोडीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस आयोडीन टा सबुठार बड़ तो जदि आयोडीन टा खली हुए एंड नेहाकाकर तो हाइड्रोजन टा समान सो जदि दैट इज गोटे सिमिलर हाइट रहा दरकार तो फ्लोरिन छोट हाइड्रोजन भी छोट तो दी जन भीतर गोटे मस्त बॉन्डिंग थी ना नहीं भांगी पारे जमा एंड जी जिते इजिली एचएफ टा भांगिले कौन हम H प्लस F माइनस तो भांगिले सीना H प्लस F माइनस देवे आ जी H प्लस दब सी होची एसिडिक सो एचएफ टा आंक भीतर किए जल्दी भांगी जिवे जे बैड कपल किए सबुठार बड़ हाइट होची आयोडीन रो आ सबुठार छोट होची कि हाइड्रोजन तो ये होची सबुठार स्मॉल हैला बेलू ये सबुठार लार्ज तो गोटे बैड कॉम्बिनेशन नो आंक भीतर जल्दी भांगी जिवो बॉन्डिंग टा सो दैट एचआई टा जल्दी भांगी जिवो माने जल्दी H प्लस दे दो जल्दी H प्लस दे दो ना जल्दी एसिडिक कैरेक्टर सो एचआई अधिका then HBr then HCl then HF so हबो परफेक्ट ओजे रिजल्ट्स आसी आज पळी आस देन नेक्स्ट पचार दैट इज मते को कि वाटर रो हाइब्रिडेशन केते एंड वाटर रो ज्योमेट्री केते हु कैन से व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ वाटर एंड ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोजन हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री परफेक्ट बस मन रखे दरकार चलो कौन हम वाटर एसपी सत्यजित कौन आंसर तले दैट इज वाटर हो हाफ ऑक्सीजन रो ग्रुप नंबर 16 सो आफ्टर मैं 6 प्लस 2 6 ऐड बाय 2 4 4 माने sp3 हाइब्रिडेशन एंड ज्योमेट्री इक्वल टू टेट्राहेड्रल परफेक्ट बढ़िया नेक्स्ट बा BCl2 छाड़ ये क्वेश्चन हबनी नेक्स्ट जो जीवा हमें जनरली तुम पचारिया वन सेकंड तार फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन नबा among which of the following is a Lewis acid BF3 CCl4 NF3 लुइस एसिड किए सर तथापि बहुत डर लगुच कि कौन पाई जेती काउंसिलिंग में डर लागु नथिला भगवान आ डर बोली कोन एंती लुच्ची कि जुएंती गामछा एंती घोड़ी की डर लगुच बोली अरे चिल यार डर लोक अरे सर काली पाई बास आपनका आशीर्वाद जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद नियो प्रभु सब ठीक ठाक हो चलो कौन आंसर तो लुइस एसिड होची BF3 एंड हम जानि छे दैट इज ग्रुप 13 जो एलिमेंट गुडा रहलेनी कौन बॉल गला इंडिया तळकू तो ग्रुप 13 जो एलिमेंट रहले माने होची इलेक्ट्रॉन कांगाळ बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जो माने इलेक्ट्रॉन कांगाळ बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ताको कोन दरकार इलेक्ट्रॉन दरकार एंड द इलेक्ट्रॉन को रिसीव करिवो जे दैट इज लुइस एसिड अकॉर्डिंग टू लुइस कहि देले बाप धन सी होची एसिड जे कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करिवो आ इलेक्ट्रॉन रिसीव करिवो कि जे पेटे खाइतो से कोन रिसीव करिवो जे खाइ नथियो भोकिला दियो से रिसीव करिवो सो दैट BF3 नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा को कि जनरली BF3 रा हाइब्रिडेशन केते BF3 रा हाइब्रिडेशन केते कौन आंसर कौन है ला
that is okay BF3 half boron roji group number 13 so atomic electron is 3 and surrounding atom is 3 3 3 6 by 2 3 ए तो जानिचो तो sp2 आंसर कोन sp2 कार sp3 आइतला sp2 बढ़िया बढ़िया रेडी पानी पानी सब ठीक अछि बाकी खाली टिके खाली भलो से टिके ई करिवो सेठी मन ध्यान देगियो आ किछि नै आ सेठी यदि घुमेलो असुविधा देन आउट कहलो LiCl NaCl KCl अंक भितरु कोभालेंट कैरेक्टर ऑर्डर को कोन हबो बस जस्ट चिल सो कोन हबो आंसर LiCl NaCl गोटे साइंटिस्ट थिले फजन गोटे आंब गछ मूले बसथिले एंड से गोटे कथा कहि दिथिले कि कोभालेंट कैरेक्टर तुम केमिति बाहर करिवो ना आगो कोन कर आगो भांग से गोटे देथिले रूल कोभालेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोटे तो रूल चार्ज ऑफ कैटायन C+ माने कोन कैटायन ऊपर प्लस चार्ज रहले कैटायन एटम ऊपर प्लस चार्ज रहले कोभालेंट कैरेक्टर इज चार्ज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ anion directly proportional to size of anion and inversely proportional to size of cation ई चारटा जिंस को देखि कि नो तम आराम से दैट इज तम कैलकुलेट कर दबो छी कोवेलेंट कैरेक्टर तो आखी मुजी कि पूरा स्ट्रेट आखी बंद करिवो आखी बंद करके LiCl को भांगी दबो कोन Li प्लस Cl माइनस एति कि त आसीबो ना Cl माइनस Na प्लस को भांगी दबो आखी बंद करके Na प्लस Cl माइनस KCl को भांगी दलो K प्लस Cl माइनस तो सागे सागे फजन रूल पकेबारे फजन देई दिथिले कोन ना कोवेलेंट कैरेक्टर चार्ज ऑफ कैटायन को नहीं बाहर करबियो चार्ज ऑफ आनायन नहीं बाहर करबियो साइज ऑफ आनायन बाहर करबियो तो मो बगैर कोन छै आनायन तो समस्त को समान Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस तो Cl माइनस नहीं तुम कोनटा डिफरेंशिएट करिवो चांस नहीं तो तुम कोन करिवो कैटायन को देखिवो तो कैटायन रो तुम कोन पाखरे तो कैटायन को तुम पाखरे कोन रूल अछि दीटा आइदर तुम चार्ज ऑफ कैटायन देखिवो नले साइज ऑफ देखिवो एंड चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज को इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सब मन रखियो चार्ज और साइज भीतर जते बाडिया बाडी हेबेनी आगो मोर प्रायोरिटी कहा गेलो चार्ज सो आगो चार्ज देखो इ तो प्लस गोटे चार्ज इडी तो गोटे चार्ज समस्त को चार्ज समान तो चार्ज समान को नहीं भी देखि परियोनी कोन देखो साइज लिथियम सोडियम पोटेशियम साइज कार अधिका डाउन दी ग्रुप कोन जते ऊपर तळु आसीबो साइज टा कमिवो सो सोडियम रो साइज टा कोन सॉरी ऊपर तळु आसले साइज बढ़िवो पोटेशियम रो सबठार अधिका साइज एंड साइज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जार साइज अधिका तार कोवेलेंट कैरेक्टर कम सो कोवेलेंट कैरेक्टर कम कार KCl अधिका कार LiCl तो LiCl NaCl KCl आई थिंक समझ कर शेयर आथिबो स्मॉलर कैटायन लार्जर एंड परफेक्ट SCLA ये रूल भी मन रखो स्मॉलर कैटायन लार्जर आनायन कैटायन को स्मॉल कैटायन को आगो देखो जो जी स्मॉल कैटायन सी ही कोवेलेंट कैरेक्टर अधिका नले आनायन जो देखुचो लार्जर आनायन देखो जो आनायन रो अधिका चार्ज स्मॉलर कैटायन लार्जर आनायन SCLA बढ़िया परफेक्ट स्मॉलर कैटायन लार्जर आनायन तो LiCl रो बढ़िया तो सेही अनुसार जदी आर्निक कैरेक्टर पछर उल्टीबो फिजिक्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बायोलॉजी क्वेश्चन दैट इज आर्टरी अच्छा सॉरी ए दीटा डायग्राम भितरु को कि को डायग्राम ता आर्टरी रो को डायग्राम ता वेन रो which one is the structure of artery and which one is the structure of vein sir OUT offline class विषय को दु OUT offline class विद्यासागर क्लास रिची रेसिडेंसी फ्रंट आईडी मार्केट बा इंद्रधनु मार्केट नयापल्ली ता फ्रंट रे अवस्थित एंड जोतरे कि तमे क्लास करि परिबो चलो तो आर्टरी कोन आर्टरी रो जदी हमें देखिया लुमेन रो डायमीटर ता होची स्मॉल this one is the structure of artery and this is the structure of vein and the lumen ro diameter ता अधिका ठीक अछि ए हला तो 190 वाचिंग एंड हमें ट्राई करिया कि 200 क्रॉस करे पे लास्ट रे तो आर्टरी एंड वेन चलो तापर मते को कि जनरली
CH4 BF3 H2O NO2 minus NO2 एतिकी भितरे कहार sp2 hybridation कहार sp2 hybridation we can say मो लाइफ रो फास्ट एंट्रांस नर्वस पढ़ी गले सिना नर्वस लगियो जे न पढ़ी जेतो ताको जमा नर्वस लगियो आ मते एग्जाम टाइम रे निद लागे देखो बाकी से भी नहीं हला मते स्क्रीन में पूरा कंप्लीटली आज 200 करिया हमें चलो तो आंसर कौन हो CH4 हाइब्रिडेशन हाफ carbon is 4 and surrounding atom is 4 4 for 8 by 2 4 so here is sp3 eta sp3 हां ए bf3 केते हाफ बोरॉन रहउची 3 प्लस सराउंडिंग एटम 3 so 3 3 6 by 2 3 sp2 h2 रो केते हाफ ऑक्सीजन रो 6 and सराउंडिंग एटम 2 6 2 8 by 2 4 sp3 तो इठी गोटे sp2 आसी and no2 minus कोन हाफ नाइट्रोजन 5 plus 1 6 by 2 3 that is sp2 तो sp2 की हबो गोटे होची bf3 आ गोटे होची no2 minus चलो ए दिटा हबो हैला बस बस बढ़िया बढ़िया चलो मस्त अछि तापर को जनरली अच्छा फिजिक्स रो गोटे कहलो दैट इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स रो डायमेंशन कोन वो कैन से व्हाट इज द फोर्स ऑफ अ डायमेंशन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड आको भीतर कहार डायमेंशन समान वर्क एंड एनर्जी एंड फोर्स मास एंड एक्सीलरेशन माने गोटे मन इच्छा देली आको भीतर को कहार डायमेंशन समान को देन फोर्स रो डायमेंशन को देन एनर्जी रो डायमेंशन को कोन हबो फोर्स रो m1 l1 t-2 force equal to mass into acceleration and here mass for m acceleration that is velocity by time so velocity by time and again velocity is equal to distance by time length by t square so m1 l1 t-2 for the force and for the energy m1 l2 t-2 पढ़ नहीं रहो m1 l2 वर्क और एनर्जी आंसर होच तार वर्क एनर्जी तार एनर्जी रो बाहर करि परिबो काइनेटिक एनर्जी रो बाहर करि पर हाफ mv2 कर बाहर कर हाफ तो कैलकुलेट करा जीवनी मास को मास रखिलो वेलोसिटी रो स्क्वायर वेलोसिटी होची लेंथ बाय t रो स्क्वायर डिस्टेंस रो स्क्वायर m1 l2 t-2 m1 l2 t-2 फॉर द एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी रोची समान हला एंड एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स समान एटा मन रखि दो माने कोन कहलो गोटे नाही गोटे को मानकर डायमेंशन समान क्वेश्चन पचारेनी वर्क एंड फोर्स इक्वल सेम थिंग वर्क एंड एनर्जी समान ना weight up that is angular momentum and Planck's constant same dimension and also work energy and torque same dimension weight up माने मतलब जने जाउची तम ता कुछ weight up work energy torque and this is angular momentum and Planck's equal ऑफलाइन रो 1 ईयर कोर्स प्रज्ञा 1 ईयर कोर्स जाने पे तुमको तळे नंबरटा स्क्रॉल करथियो गोटे नंबरटा से नंबर कांटेक्ट करो हला ए कांटेक्ट ए सुनो केते नंबर कहि होबनी यार प्लीज एग्जाम दियंतु पिला तापर जे जाना पड़ियो सर मु कॉल करते रिसीव करलेनी सॉरी क्लास होला परे कथा ही जय जगन्नाथ हैप्पी ओके चलो तो नेक्स्ट जदी हम पचरा जीव दैट इज केते सारा मने पडुनी जिंस रो गोटे मिनिट एग्जाम पई कोन करिवो रातिटा क्रॉस करिवो एंड खाई पी के आराम से सो सकाळे एग्जाम दबो किछि भी टेंशन नियोनी जा हबो
ओके तो तापर मत को कि जनरली suppose here is a vessel 1 and molarity equal to 2m and here H2SO4 is there. Find normality. Normality kete? Molarity equal to 2 molarity and H2SO4 is there. Find normality. And the relation between normality and molarity already I have already said, that is nomon mon rakhe achi. Nomon. Normality equal to molarity into n factor. तो कौन होबो? तो normality equal to molarity and molarity kete is 2 and n factor kete H2SO4 n factor is 2. So 2 into 2 that is 4. बढ़िया रेडी. तापर गोटे क्वेश्चन को suppose 98 gram of H2SO4 present in 100 ml of solution. Find normality. Normality बाहर करो. कौन होगा? Normality. Already molarity रो क्वेश्चन कर लो तो normality बाहर करो. गुड इवनिंग, नमस्कार सर. 30 मिनट पछरे 2x मारिक आसिली तो कौन होगा नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी रो फार्मूला कौन? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड रॉन्ग. नॉर्मलिटी होची नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट रो फार्मूला कौन? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. क्वेश्चन पचाचे 98 ग्राम ऑफ H2SO4. सो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट. तो वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट केते? H2SO4 इक्विवेलेंट वेट दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय दैट इज केते 2 d dash plus d. तो मॉलिक्यूलर वेट केते 98 बाय 2 किछ 48. सो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 48 ठीक अछि डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर देछि ताको लीटर कले 100 बाय 1000. तो सॉल्व करि परिबा आराम से. कोडी आछि 48 into 2. सो 2 into 1000 बाय 100 110 दैट इज 20. परफेक्ट. जो बरकर आंसर 20. बढ़िया बढ़िया. दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू 20. एंड 80 नॉर्मलिटी देला तुम जदी मोलारिटी पचार दबो. नॉर्मलिटी देला इस आधरे मोलारिटी केते आसीबो? एग्जाम खाली बढ़िया हबो. कोन आंसर माने 189 200 भी एई पेलानी. छी छी. चलो कौन होगा आंसर? नॉर्मलिटी होची केते 20 है. नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर. तो n फैक्टर तो 2H2SO4 पे एंड मोलारिटी बाहर कटे. मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय 2. तो 20 बाय 2 जा हबो 197 जाय जाइतले. चलो देन मते को कि बड़ी इजी क्वेश्चन देखिया पचारिया. दैट इज ऑल द cells are arising from the pre-existing cells. All the living cells are arising from the pre-existing cell. किए देतले? All the living cells are arising from the pre-existing cell. किए 193. So हमारा टारगेट 200 प्लस. दैट इज रूलो भिर्चो. गोटे नथिला डबल प्लेयर भिर्को. जो भिर्चो ना एमती नथिला खलीस फाइटिंग करे भिर्चो. भिर्चो कहिथिले जेतले एक्चुअली हम जानिथिले सेल थ्योरी देथिले कि स्केलेटन एंड स्क्वायर. तो स्केलेटन एंड स्क्वायर जनरली कहिथिले कि all the living organisms are the product and the
composed and product of cells. All the living organisms are composed and product of cells, but exception that ସେମାନେ କହି ପାରିନଥିଲେ କି ସେଲ୍ ଟା ଆରାଇଜ ହୁଏ କୋଉଠି. ସୋ ସେ ସେଲ୍ ର ଆରାଇଜ କୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ କିଏ, that is ଆମର ଥିଲେ କିଏ ନା ରୁଲ ଅଫ ଭିର୍ଚୋ, ଯିଏ କି କହିଥିଲେ all the cells are arising from the pre-existing cell. Perfect. Then who discovered nucleus? आकु नेकी एइठी ने पचराबो पांचटा क्वेश्चन. न्यूक्लियस की डिस्कवर करथिले, आंसर फटाफट को. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? 195 वाचिंग. विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला. बढ़िया, दिस लाइन इज इंपोर्टेंट. ओमनी सेलुला ई सेलुला. All the living organisms, all the cells are arising from the pre-existing cells. न्यूक्लियस के डिस्कवर करथिले, that is रॉबर्ट ब्राउन. एंड मते को कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, these are the single membrane bound organelle ना double membrane bound organelle ना non membrane bound organelle. कौन हबो? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, these are single membrane, double membrane ना non membrane. कौन आंसर? that is all are double membrane bound organelle. Perfect. Then मते को कि generally nucleus, mitochondria and chloroplast through which one is semi autonomous organelle and which one is autonomous organelle? Double membrane को that is की होची semi autonomous organelle और की होची autonomous organelle. and strictly मन रखिया अछि nucleus is the autonomous organelle. I hope काली क्वेश्चन पढू. and mitochondria, chloroplast is semi autonomous organelle. काली मते ग्यारंटी लागुची कि जो वाटर मूवमेंट ता करूची लो डीपीडी टू हाई डीपीडी पडिबो. काली लो डीपीडी टू हाई डीपीडी पडिबो. आ ये प्लाज्मोलिसिस को नेकरी क्वेश्चन पचारे गोटे सेल को तळे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पको जो वाटर ता मूव करिवो. आ निहाती प्लांट हार्मोन रु ग्यारंटी क्वेश्चन पचारिवो. ग्यारंटी देकी आसीबो. जदी नथिबो पूरा ग्यारंटी तमरा प्लांट हार्मोन रु क्वेश्चन पचारथिबो. ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड पूरा स्ट्रिक्टली पडिथिबो पूरा. एंड ह्यूमन सर्कुलेशन रु इजी क्वेश्चन पचारिबो. फॉर एग्जांपल तम क्वेश्चन पचाला that is when the heart sound law will produced. who can say केते बळे हार्ट साउंड लॉ प्रोडक्शन होबो? when the heart sound law will be produced. ट्राइकस्पिड क्लोज ना बाइकस्पिड वाल्व? ग्यारंटी पडिबो. केते बळे लॉ प्रोडक्शन हुए? समस्त आंसर कोन? that is during the closure of bicuspid and tricuspid valve closure बेले. then मते को कि that is the second heart sound dove केते बळे प्रोडक्शन हबो? second heart sound dove केते बळे प्रोडक्शन हबो? closure of tricuspid ना closure of semilunar valve? that is closure of, that is कोन हबो ना dove sound production हबो during the closure of semilunar valve. important. and मन रखिबो all artery carry oxygenated blood but exception pulmonary artery. strictly मन रखिबो हला. बडा से मन रखिबो all artery carry oxygenated blood. and निहात रूपे तमे काली जाओ हाइब्रिडेशन को लेकी क्वेश्चन पचारिथिबो. ग्यारंटी एटा मन रखो. हाइब्रिडेशन ने क्वेश्चन पचारिथिबो. ज्योमेट्री को लेकी क्वेश्चन पचारिथिबो. and also bond order को लेकी क्वेश्चन पचारिथिबो. आईपैक नोमेनक्लेचर को लेकी क्वेश्चन आस्थिबो. ग्यारंटी पूरा ग्यारंटी मन रखितो पढिबो पूरा. तो एडा सब तुम क्वेश्चन सब पढिथो जहा तुम आसीबो. तापर मते कोइ कि जनरली ए रिएक्शन कोन को जे anhydrous aluminum chloride gives rise toluene. this is Friedel-Crafts alkylation na Friedel-Crafts acylation. कोन हबो? benzene when the benzene is react with CH3 and Cl. कोन हबो? that is toluene जेतර प्रोडक्शन हो Friedel-Crafts alkylation. और सर मिठा दियंतु श्योर मिठा दियाबो जेतර तमर रिजल्ट आसीबो मिठा दियाबो. एंड विद्यासागर क्लासेस तरफ जो 7 तारिख रहला 7 तारिख हमर ऑफलाइन सेंटर को सब पिला को वेलकम आसो. एंड एटी तमर ऑल टू ऑल अरेंजमेंट करायछि, लॉन्च अरेंजमेंट करायछि. तमर कैरियर रिलेटेड ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन पाई परिबो. 7 तारिख दिन समस्त आसो. जो माने आसी परछो भुवनेश्वर जो पिला माने वाच करछन्ती जनरली से माने ट्राई करो ऑफलाइन सेंटर को आसे पे. सब पिला आसी परिबे. हमर स्टूडेंट हो तो न हो तो दैट इज समस्त आसी परिबे. ताले कोन हबो? दिस इज Friedel-Crafts alkylation. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज CH2 double bond CH CH3 react with HBr H2O2 peroxide. प्रोडक्ट कोन बाहरिबो? ऑप्शन दोची CH3 CHBr CH3. ऑप्शन 2 that is CH2Br CH2 CH3. कोन हबो? कोउटा प्रोडक्ट जनरली बाहरिबो जेतबेले HBr peroxide से रिएक्शन करिवो.
HBr peroxide reaction माने anti Markovnikov's rule पड़िबो and according to anti Markovnikov's rule डबल बॉन्ड रो Markovnikov's rule कोन डबल बॉन्ड रो जो पटे हाइड्रोजन अधिक सेपटे हाइड्रोजन बसाओ जो पटे हाइड्रोजन कम सेपटे ब्रोमीन बसाओ किंतु anti Markovnikov's rule रे कोन दैट इज डबल बॉन्ड रो जो पटे हाइड्रोजन अधिक सेपटे ब्रोमीन बसाओ जो पटे हाइड्रोजन कम सेपटे हाइड्रोजन बसाओ सो आंसर इज दिस ओके परफेक्ट Markovnikov's रो anti Markovnikov's रो क्वेश्चन पचारे सबळ पई हला मन रखियो पूरा इजी क्वेश्चन तापर मते को कि जनरली FeH2O रो होल 6 प्लस 2 ऑक्सीडेशन नंबर कोन कोऑर्डिनेशन नंबर कोन क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोन एंड sp3d2 ना d2 sp3 हाइब्रिडेशन कोन हो को आंसर दियो कोन हो दैट इज FeH2O होल 6 प्लस 2 आमे जानि छे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करै पे आखी मुजिकरी आगो दीटा ब्रैकेट बसेला पर तळ माइनस ओड दे देबा चार्ज केते अछि 2 अछि माइनस आमे जानि छे वाटर सबळ भाई मन रखिबो वाटर को पानी दियोनी वाटर को माने सॉरी अमोनिया को पानी दियोनी माने जीरो हला अमोनिया थिले जीरो कार्बन मोनोऑक्साइड थिले जीरो H2O थिले जीरो अमोनिया को पानी दियोनी H2O अछि सो जीरो होबो सो केवल ऑक्सीडेशन नंबर केते जीरो कोऑर्डिनेशन नंबर केते 6 अछि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 एंड sp3 ना d2 एटा वीक फील्ड लिगैंड तो वीक फील्ड लिगैंड कोन होबो sp3 d2 okay sp3 d2 and crystal field splitting energy that is Fa plus 2 argon 18 4s2 that is जदि हमें देखिबा आयरन रो एटॉमिक नंबर इज 26 सो 3d6 Fa plus 2 लेले कोन केवल 3d6 एंड हमें जानि छे जेतेबेले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थिबो आखी मुजी की ऊपर दीटा बॉक्स तळे तीनटा बॉक्स एंड ऊपर दीटा बॉक्स जगह 3/5 लिखार अछि तळे तीनटा बॉक्स जगह -2/5 लिखार अछि सो 3d6 एंड वीक फील्ड न आगो तळ को भरो 1 2 3 4 5 बळिले तळ को आसो सो केते होबो 2 into 3/5 प्लस 2 3 4 into -2/5 तो 6/5 minus 8/5 तो 5 6 minus 8 minus 2/5 जा हेतिबो हला एंड कोड जदी कोड टिके मिस्टेक हेतिबो सो दैट तमे ताको परे चेंज करिवो स्पीडली हमें करछे जेहेतु एग्जाम रो पूर्व राती एंड माहौल पूरा गरम होची सो दैट हमें कोड टिके भूल हेई पारे हला -4.8 एंड -4.8 तुम बाहर माने 0.8 0.4 जहां भी हेतिबो चलो नेक्स्ट जीवा आसीबो रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो अच्छा दैट इज बॉक्साइट इज द ओर ऑफ बॉक्साइट ता कहार ओर बॉक्साइट इज द ओर ऑफ बॉक्साइट ता कहार ओर बॉक्साइट ता कहार ओर बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम एंड स्ट्रिक्टली मन रखिबो एंड ऑर्डर होची मन रखे पे एल्युमिनियम पचरियो बॉक्साइट पचरियो एल्युमिनियम को मे तेरा कोन तो जनरली एल्युमिनियम किछि आंसर दे परियोनी तो बॉक्साइट निजे आंसर दबो तेरी ओर एल्युमिनियम टू बॉक्साइट टू एल्युमिनियम मे तेरा कोन एंड जेतोले किछि भी आंसर आसी माने एल्युमिनियम आडू सो बॉक्साइट निजे कहबो कि तेरी ओर सो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम मन रखे अछि ठीक अछि परफेक्ट देन मते को कि हेमाटाइट मैग्नेटाइट आयरन पाइराइट these are the ore of car ore hematite magnetite iron pyrite car ore iron ore perfect these are the ore of iron perfect बढ़िया अछि अच्छा देन मते इटी को जनरली हमें देखिबा जो काओ थिला रोजी रे जनरली मिल्क ता केते ग्राम थिला एंड को टाइप रो प्रोटीन थिला रोजी जो काउ थिला बा ट्रांसजेनिक काउ थिला बा मैनिपुलेटेड काउ थिला तो मिल्क रे जनरली केते ग्राम रो प्रोटीन थिना एंड आल्सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन कोन हबो पढिया अछि समस्त का आंसर दैट इज 2.4
4 ग्राम पर लिटर थिला एंड प्रोटीन होची ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन बढ़िया ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन एंड थिला होची कोन दैट इज बढ़िया ह्यूमन अल्फा लैक्टाबुमिन एंड ये सो ओके नेक्स्ट चलो क्वेश्चन दैट इज हिंड टू केते बेस पेयर सब काटे 4th बेस पेयर 5 बेस पेयर ना 6 बेस पेयर जनरली को बेस पेयर रे हिंड 2 टा कट करे हिंड 2 जनरली सर केमिस्ट्री हबो तो 100% हबो ऑलरेडी सारा तुम पढ़ाई एंड बहुत बढ़िया से भलसे तुम पढ़ापढ़ी करथिबो एंड पॉजिटिव रो हबो हला कोन हबो 6 बेस पेयर काटिबो रेडी देन मते को कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रोडक्शन करे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोडक्शन करे रे कहार का रोल थाए algae प्लस फंजी ना बैक्टीरियो फेज प्लस बैक्टीरिया ना रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगी कहार कहार कॉम्बिनेशन रे जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो फॉर्मेशन हुए आंसर कोन हबो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहार मिलित ये जो फॉर्मेशन है दैट इज बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया जेतोले जनरली हम जानि छे बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस व्हिच विल अफेक्ट द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया निजु को बंचिया पई वायरल रो डीएनए थारो निजु को बंचिया पई गोटे एंजाइम प्रोडक्शन करे बा हम कहि परे बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम टू रेस्ट्रिक्ट द वायरल डीएनए तो वायरल रो डीएनए थारो निजु को बंचिया पई बा रेस्ट्रिक्ट करे में जो एंजाइम प्रोडक्शन करे दैट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मन रखिबो फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होची हिंड 2 नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पाखरे जनरली केते परसेंट ऑक्सीजन लंग्स रु ब्लड भितरे जनरली केते परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ट्रांसफर हुए बा आरबीसी द्वारा ट्रांसफर हुए 97% ना 90% ना 80% केते परसेंट ऑक्सीजन आरबीसी द्वारा ट्रांसफर हुए 97 ना सी दैट इज 97 ना 90 ना 80 कोन हबो हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जनरली ट्रांसफर बाय द आरबीसी कोन हबो 97 ना 90 97 परफेक्ट देन मते को कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म रे मूवमेंट करे बाइकार्बोनेट ना कार्बोनेट ना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म रे मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हुए बाइकार्बोनेट ना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कोन हबो दैट इज राइट आंसर इज बाइकार्बोनेट परफेक्ट बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन करे पे कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल देन मते को कि जनरली लाइपेज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ लाइपेज ता कहा को डाइजेशन में इंपोर्टेंट लाइपेज इज इंपोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ कहा पई देन मते को कि स्टूल रो कलर पई व्हिच वन इज रिस्पांसिबल बाइल ना पैनक्रियाटिक जूस व्हिच वन इज रिस्पांसिबल फॉर द कलरिंग ऑफ द स्टूल बा झाडारा कलरिंग पई कोटा इंपोर्टेंट बाइल ना पैनक्रियाटिक जूस लाइपेज इज इंपोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड स्टूल रो कलर पई दैट इज रिस्पांसिबल बाइल परफेक्ट देन नेक्स्ट चलो हेपेटोसाइट सेल इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑर्गन लिवर किडनी हार्ट जनरली इन व्हिच ऑर्गन द हेपेटोसाइट सेल इज प्रेजेंट कौन आंसर हेपेटोसाइट सेल प्रेजेंट इन द लिवर परफेक्ट ओके देन मते को कि जनरली पॉन्स एरिया रे को सेंटर थाए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर व्हिच सेंटर इज प्रेजेंट इन पॉन्स एरिया which center is present in the pons area that is the respiratory rhythm center na pneumotoxic center who can say and the right answer is pneumotoxic center monoco p for pons and p for pneumotoxic center बढ़िया तापर बाहर करो that is हां n2 bond order केते डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिसा तापर मु तुम कहितली ए रूल पकेबो 14 हेले 3 15 हेले 2.5 16 हेले 2 17 हेले 1.5 18 हेले 1 सेही भले 13 हेले 2.5 12 हेले 2 11 हेले 1.5 10 हेले 1 जहा हिथिबो हां 14 को सबले पे सेक्टर धरि चलिबो ऊपर ऊपर हेले 0.55 कमेबो
एंड तळु तळु आसले 0.55 कमेबो नाइट्रोजन गोटे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 तो डीटा नाइट्रोजन केते हला 14 14 ला माने बॉन्ड ऑर्डर केते 3 परफेक्ट ओके रेडी सो दैट इज मते को कि what is the relation between frequency and time period frequency and time period भितर relation कोन that is frequency equal to t square ना कोई पर frequency equal to 1 by t period तो कोन what is the relation between frequency and time period okay so what is the dimension of Planck's constant E is equal to h mu तो जनरली h रो डायमेंशन कोन E equal to h mu as you know that by E equal to hc by lambda so here what is the dimension of h रो dimension कोन we can say E equal to h mu so h रो dimension and correct हेलो 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 जो वॉइस सुना होला हेलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये संपत सर नथिंग इज विजिबल एबे हां हला एबे हला देखिलो एलडी जाओ पिला अछंती हो माने पड़ियो प्रदीप प्रताप वॉइस ऑफ कृष्णा प्रीति जोस्ना वैकुंठ पायल ओम प्रकाश रोशन सत्य संपत अरुण सुदीप्ति अंकित एंड मितु संजुला श्रद्धा किटू कन्हा पायल यार मोर छरे एवरीथिंग इज विजिबल ओके तो कौन सेटा करथिले E is equal to h mu एंड थैंक यू कि सब पॉसिबल हैला केवल एंड केवल पिंकू सार पई एंड तुम माने बैक रे देखि परथियो पिंकू सार को जोत में तुम एते वेट थिला तो देखि परथियो ओके यस सो E equal to h mu थिला ना तो आर हमें डायमेंशन बाहर करा थिला h रो यस पिंकू भाई की जय एंड लिटरली सी दैट इज कैमरा फ्रंट को न आसी बहुत सारा काम करछन तमरो एडिटिंग हो तमरो फ्रंट रे कोन सब एनिमेशन दिया हो सब थिंग ओके E equal to h mu सो h रे जति बाहर करे हमें डायमेंशन E equal to h mu हेले h equal to E by mu एंड एनर्जी रे हमें ऑलरेडी बाहर करछे m1 l2 t-2 एंड mu फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड सो टाइम पीरियड को ऊपर ने गेले कोन हो m1 l1 t-2 एंड एटा कोन t इनवर्स ऊपर ने गेले खाली t
तो m1 l1 t minus 1 हबो so m1 l1 t minus 1 perfect okay yes thank you pinku sir yes perfect m1 l1 t minus 1 बढ़िया अछि पूरा पानी अछि तमरे ना किछ टेंशन नहीं तापर चलो फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर रास्ता अछि 50 किलोमीटर तुम गल v1 वेलोसिटी रे एंड अधा हाफ किलोमीटर गल आउ अधा बाट गल v2 वेलोसिटी रे ताहाल तुमको टाइम पीरियड बा टाइम केते लागिवो टोटल टाइम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो टाइम पीरियड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस लेट इट ए टाइप रो क्वेश्चन तुम आसीबो दैट इज 2 v1 v2 बाय v1 plus v2 छाड़ो फिजिक्स बुझियानी हमर चलो बायो को एंड देखो फर्स्ट क्वेश्चन दर तुम पचरला डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल बा जोटा के हम कहि परे ओटे एज रिलेटेड डिजॉर्डर कोन हबो ऑप्शन दउची डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल कोन हबो ओस्टियोपोरोसिस परफेक्ट बढ़िया osteoporosis next iba that is the pleural membrane kahar covering pericarp kahar covering then hochi pericardium kahar covering then kon hobo ko plasma pleural membrane is the covering of lungs pericarp that is the covering of fruits and it is again divided into epicarp mesocarp and endocarp and the pericardium is the outer covering of heart तो जनरली मते को कि the hormone ANF arterial natriuretic factor food release हुए liver heart na kidney the arterial natriuretic factor will release from liver heart na kidney right कोन आंसर that is heart perfect चलो then मते को कि जनरली among the four chamber of heart right atrium left atrium right ventricle left ventricle that is co chamber thickness is more in which chamber right atrium left atrium right ventricle left ventricle the thickness of which chamber is more right ventricle na left ventricle na left atrium na right atrium who can say right atrium na left atrium na right ventricle na left ventricle kon hobo that is left ventricle perfect left ventricle thickness ता होची सबठारु अधिका बढ़िया अछि तापरे को जदी n equal to 1 second suppose कोटा करेक्ट आ भितर मते कहबो हला which one is correct 3 2 1 1/2 हला कोटा इम्पॉसिबल को 3 3 4 1/2 3 2 1 1/2 which one is impossible quantum number question वो कौन हो 3 2 1 1/2 3 3 4 which one is impossible कोटा impossible कौन हो एंड हम जानि छे n l m so impossible कौन हो जदी वैल्यू n देथिबो ताले l बार करे 0 to n - 1 so एई ऑप्शन ता देखिबो तुम बी ऑप्शन देखिबो एडी जे सेल देला 3 तो सब सेल l = 0 to n - 1 हबा कथा so 0 1 and 2 हबा कथा सो एटी केते 3 देछि तो एठी ही भूल बारी आउछि एंड m बार जतले n देथिबो सेतले l बारी होछि 0 to n - 1 एंड m बारी होछि -l to +n गारंटी एथरो ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारिबो देखियो गाली गारंटी क्वेश्चन पचारिबो n देथिबो l बार करिवो m बार करिवो ताले इनकरेक्ट इज b समस्त आंसर ठीक अछि दैट इज b इज इनकरेक्ट ठीक अछि तापर मते को कि जनरली इफ n equal to
1 मिनिट जदि जनरली n इक्वल टू 2 ताहले जनरली केतेटा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हे परिबो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते फार्मूला होछ कोन 2n स्क्वायर सो 2 into 2 रो स्क्वायर जहा हो सेमति जदि l देथिबो ताले केते इलेक्ट्रॉन रहि परिबो 2 तो से अनुसार करिवो ठीक अछि ओके परफेक्ट एंड मन रखिबो वर्क एनर्जी एंड टॉर्क ए तीन जन करो डायमेंशन समान हैला वर्क रो जहा एनर्जी से टॉर्क से एंड एंगुलर मोमेंट अच्छा मते कोइ कि जनरली स्ट्रेन रो डायमेंशन कोन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन हु कैन से डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर स्ट्रेन रो कोन हो प्रेशर रो कोन हो सर मोर आधार कार्ड रे फोटो मु चेंज करिन तो मु कोन आधार कार्ड रे फोटो जे तुम छुआ बेले फोटो अछि 15 वर्ष तळ चेंज करिया कथा जदी तुम 15 वर्ष ऊपर चेंज करा तो जदी करिनो तो स्कूल रो आइडेंटिटी कार्ड नै करी जाओ +2 रो तो स्ट्रेन रो कोन हो दैट इज द ओरिजिनल सो m0 l0 t0 डायमेंशन लेस परफेक्ट एंड दैट इज प्रेशर रो फार्मूला कोन प्रेशर रो डायमेंशन कोन हो फोर्स बाय एरिया एंड ऑलरेडी जानि छो फोर्स रो बाहर करछो ma तो m1 l1 t-2 and area is l square so m1 l1 and l to the power -2 t-2 जा हबो m1 l -1 t-2 ठीक अछि एंड सेम मन रखिबो एंगुलर मोमेंट और प्लांक्स कांस्टेंट रो बाहर करले ऑलरेडी इक्वल h म्यू करी ठीक अछि सो नेक्स्ट जिबा अच्छा तापर मते को कि p q r s t अंको भितरे जनरली QRS टा काहा को डिनोट करे PQRS T भितरे QRS काहा को डिनोट करे PQRS T QRS काहा को डिनोट करे को सर फॉर्म बी नै कि जीवो कि फॉर्म बी तमे नै कि जीवो नाही फॉर्म बी टा केवल फिल अप करिवो किछि भी फॉर्म बी नै दियो आई कार्ड नेले भी आधार कार्ड नेबा पड़िवो आधार कार्ड सेही माने नेबे जो माने छोटो बेलर फोटो अछि एमते नाही कि समस्त नै कि जीवो जार छोटो बेलर फोटो अछि तो काळे किछि प्रॉब्लम हेबो सो दैट स्कूल आइडेंटिटी कार्ड नै कि जेरा भलो एक्स्ट्रा फोटो नहीं जाउ छथि ताले बेटर तो PQRS रे QRS का डिनोट करे एंड आंसर होची दैट इज द सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल हानवर क्लास अछि तो ये रहला तमरा आज रे डिस्कशन सर कॉलेज आधार जेरक्स नबो की आधार जेरक्स कॉलेज रो सीबीटी मोड रे खाली तम एंट्री करे में दरकार बस जहां भी नबो ओके तो जहां भी नबो सब जगह ओरिजिनल नबो आधार कार्ड नियो कि जहां भी आईडी प्रूफ नबो 100% एडमिट कार्ड रे मेंशन कराई छि कि तमे तमरो ओरिजिनल ही नै कि जीवो कोनोसी सॉफ्ट कॉपी नै कि जीवो नै सिग्नेचर सेठी एग्जाम सेंटर रे करिवो कोनोसी सिग्नेचर एठी करनी घरे रही आ गोटे मिनिट तमरो गोटे मिनिट रे हम एंड करिवा केते पिला ओइड देथिले एग्जाम सरला पर जणा पडियो 4 6 रे केते शिफ्ट रे केते केते पिला आस्थिले एबे तो प्रेडिक्शन करियोबनी ओ 2023 लेट इट यार 2024 कथा भाबो सर लास्ट क्लास यस काली सरला पर जो पिला माने जनरली क्लास करी के आसुस तो 100% तो लाइव क्लास हो नियाती क्वेश्चन मन रखी आसो सीबीटी मोड रे जेतु तमे कोनोसी पिला भूल करिवनी एग्जाम सेंटर जो पेपर रफ कर देखि साथे तमे क्वेश्चन लिखि के आनिया पई तो से मान से पेपर नै कि जिबे सो ट्राई करिवो कि क्वेश्चन मन रखी आसिया पई नियाती गोटे गोटे पिला 15टा क्वेश्चन मन रखो डायरेक्ट क्वेश्चन न मन रहिली भी क्वेश्चन कोट आसी जे पचारि हेबो जेंति हम 6 जून पई डिस्कशन करि पेरा थैंक यू ऑल ऑफ यू and God bless you all the very best